tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone, and I had control on the driver's seat. Back to my channel, Shwanika Life and Love. I hope you all doing fine, and I'm making this video after a long time. I know that there is some work at my home, so I was so busy, and today I'm making a summer party makeup look just for you guys. For parties, when you are going party in summers, you can use this tips and tricks, and you can use this makeup look for your summer party makeup. And I'm using so much of shimmery shades on my eyes and my lips also. I'm using a metallic lipstick also on my lips. And without wasting any time, let's get started. Please don't forget to subscribe my channel, and if you like this video, then please hit the like button, and don't forget to hit the bell button also, and also comment me that you like my videos or not. So let's get started with the video. Starting with my makeup with this lactocalamine lotion for prep my skin. So I'm taking a little bit of this. Color bar perfect match primer to prime my skin before foundation. So I'm applying a little bit on my T-zone. The title that it's a summer party makeup look. So before starting my foundation, applying my foundation, I'm already applied primer and prep my skin with this lactocalamine lotion, and after that I'm applying this color bar amino skin radiant foundation. It's a full coverage foundation guys. कुछ इस तरीके के बॉक्स में आती है, और इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो इसका यहाँ पे एक पंप रहता है. हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये फाउंडेशन बाहर आती है. इट्स अ थिक मैट फाउंडेशन, और ये आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. तो मेरा शेड है इसके अंदर 004 रोज माइल्ड. तो ये थोड़ा सा रोजी कलर के अंदर है, तो ये मेरे फेस पे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने स्किन पे. कर लिया अपने फेस पे. इसके बाद मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए शैम्बर का पाउडर अप्लाई करूँगी. एंड ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है. आप इसको फाउंडेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ये कुछ इस तरीके से आता है. आप इसको स्पंज को वेट करके इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी फाउंडेशन को सेट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ मैट और वेरी स्मूथ फाउंडेशन पाउडर. Fill my brows with this Miss Clear eyebrow cake, and I'm taking this brown shade to fill my brows. I'm using this Lakme 95 Pure Blush. It's a very beautiful blusher, which you can use it as a bronzer, or you can use it to contour your face.
highlight. I'm starting up with my eyeshadow working, and but before that I'm going to apply a little bit of loose powder under my eyes, on both my eyes. I'm using this Makeup Revolution eyeshadow palette, which name is Life on a Dance Floor After Party, and they had a beautiful shades, as you see. Black shade में reddish, bluish और greenish और reddish shade आपको सारे इधर न्यूड शेड्स मिल जाएंगे, जो कि पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे हैं. तो आज मैं ये पैलेट यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी इसका पिगमेंट और इसका आफ्टर इफेक्ट कैसा आता है. तो आई एम यूजिंग दिस पैलेट, दिस न्यूड शेड for applying all over my eyelid. आई शेडो पैलेट में से, और इसको अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी. रेड शेड लूँगी और अपनी क्रीज लाइन को और थोड़ा सा देख. ब्राउन शेड को मिक्स करके लगाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर के आईलिड पे. सेम रेड शेड अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी. आउटर कॉर्नर में ब्लैक कलर अप्लाई किया है और ब्राउन कलर से इसको मर्ज करा है, और मैंने अपना क्रीज लाइन के ऊपर से रेड एंड ब्राउन कलर यूज़ किया है इस पैलेट में से. और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का कैट स्वीट लिपस्टिक, जो कि मेटालिक शेड में है. इसको मैं अपने सेंटर ऑफ द आईलिड में लगाऊंगी. और हाईलाइट करने के लिए मैं ये गोल्डन शेड लूँगी अपने पैलेट में से, आईलिड्स में ही लगाऊंगी. Color jumbo pencil in white color to apply this on my bottom line. This Nykaa bold kajal in my underline waterline of my eye. Kajal with this pencil brush. I'm using this waterproof colossal mascara, in Maybelline. I'm finishing with my eye makeup, and I'm not applying any eyeliner or smudge it with the kajal. I'm just bolding up my eyes with inner corner of my eyes and applying bold smudge eyeshadows on my eyelids with my
blusher and my highlighter on my face. I'm already done with my makeup, and just going to apply a lipstick of this Revlon, and shade number is I don't know what is the shade number, but it's in red color. So I'm going to apply this on my lips. Color is HD Romance. It's a Revlon Ultra HD Matte Lip Color. A very shimmery makeup, very much shimmer and highlight on my face, and I'm doing so much shimmery shades applying on my eyelids for my eyeshadow, and I'm going to use the Wet n Wild metallic lipstick over my red lipstick to give a metallic and shimmery look on my face. So I'm going to ready for my party. No, it's a summer party makeup look, so never forget to apply a setting spray after doing your makeup, so that आपका मेकअप बहुत देर तक अप्लाई रहेगा. तो मैं रेकमेंड करूँगी ये फेसिस कैनेडा का अल्टीम प्रो मेकअप फिक्सर. तो मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे बिफोर गोइंग आउट. So guys, this is my finishing look for the summer party makeup look. I hope you like this look, and if you liked it, then please hit the like button and also subscribe my channel, and please comment me that you like this look or not, and so that I can make more videos for you guys. This video में तब तक bye.